एवरीवन, बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी की फ्री वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज का चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। आप ध्यान से सुनें। क्वेश्चन नंबर 1, सिस्टम ऑफ 8th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज। फ्रॉग के 8th वर्टिब्रा का सिस्टम एम्फीसीडस है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, hinge joint occurs between. Hinge joint is a special joint which occurs in between humerus and ulna radioulna. Option A is correct. Question number 3, Achilles tendon is associated with. This tendon is associated with gastrocnemius muscle. Question number 4, a joint made of power is mandibular joint. याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बोन्स बिकम फ्रेजाइल ड्यू टू। जिस प्रोसेस से बोन्स कमज़ोर होती हैं या फ्रेजाइल हो जाती हैं, उस प्रोसेस को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, येलो बोन मैरो occurs in medullary cavity of long bones. येलो कलर का बोन मैरो कैविटी में पाया जाता है लॉन्ग बोन्स की। क्वेश्चन नंबर 7, obturator foramen occurs in pelvic girdle. Obturator foramen occurs in pelvic girdle. The option A is correct. Next question. Question number 8. Unpaired facial bone is. कौन सी ऐसी फेशियल बोन है जो पेयर में नहीं होती? The right answer is vomer. Vomer is the unpaired facial bone. The correct option is B. Question number 9. Common to kidney and skeleton in mammal is. किडनी और स्केलेटन दोनों में कॉमन क्या है? पेल्विस. पेल्विस is common to both kidney and skeleton. Question number 10. Which one is correct match of 3 items and their grouping categories? आइटम में 3 आइटम्स दिए हुए हैं और उनके ग्रुप की कैटेगरी दी हुई है। पहला पढ़ते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ये 3 आइटम हैं और पिरिमिडिन लिखा हुआ है। मैलियस, इनकस एंड कॉक्लिया, ईयर ऑक्साइड्स। इलियम, ischium, pubis, coxal bones of pelvic girdle. Yes, it is correct. Question number 11. Thoracic case of man is formed of. The thoracic case of man is formed of ribs, sternum and thoracic vertebrae. The correct option is B. Next question. Question number 12. The end plate junction is present between. End plate junction is present between neuron and striated muscles. The option A is correct. Question number 13. In a resting muscle fiber, troponin partially covers. Resting muscle fibers, troponin partially covers
Myosin binding site of actin. The correct option is D. Question number 14. In human being, cranium is formed by cranium of human is formed by 8 bones of which 2 are paired. 8 bones of which 2 are paired. Question number 15. Example of pivot joint. Pivot joint is example is radio-ulnar joint जो बाम में पाया जाता है. Next question 16. Major function of intervertebral disc is to the question number 16. Major function of intervertebral disc is to absorb shock. The option B is correct. Question number 17. Which one is currently matched? Tibia, fibula, both form part of knee joint. Galat. It's wrong. Cartilage and cornea, no blood supply but do require oxygen for respiratory need. Yes, it is correct. सी ऑप्शन भी देख लेते हैं. Shoulder joint and elbow joint, ball and socket joint. Premolar and molar, 20 in all 3 rooted. 20 in all and 3 rooted. The option B is correct. Question number 18. Which is correct description? First vertebra is axis which articulate with occipital condyles. ये गलत है. Parietal bone and temporal bone of skull are jointed by fibrous joint. Yes, it is correct. The right option is B. Question number 19. Ankle, knee and elbow joints are synovial joints. The option D is correct. Question number 20. Which is the location of troponin in process of muscle contraction? मसल कॉन्ट्रैक्शन में ट्रोपोनिन का लोकेशन कहाँ है? इट इज अटैच्ड टू ट्रोपोमाइसिन. इट इज अटैच्ड टू ट्रोपोमाइसिन. द राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 21. Which one has oxygen storing capacity? It is myoglobin which store oxygen in muscles, red muscles. Question number 22. Which is not true for red fibers? पढ़ते हैं. ऑप्शन ए है मसल्स कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट. इट्स करेक्ट. मसल्स कंटेन plenty of mitochondria. Again, it is correct. They are also called aerobic muscles. Yes, they are aerobic muscles. Last option D है amount of sarcoplasmic reticulum is high. No, it is wrong. The right option is D. Question number 23. In mammal, the number of cervical vertebrae is 7. It is very common question. The right option is A. Question number 24. Which opening occurs in pair? Foramen ovalis occurs in pair. Question number 25. Symphysis consists of fibrocartilage. The option correct is C. Next question. Question number 26. The movable skull bone is mandible.
Option C is correct. The tail vertebrae of bird forms pygostyle. PYGO, pygostyle. 28. Which is not the function of bone? Protection of vital organs. It is the function. Homeopoiesis bone marrow में होती है. Muscles attachment. Yes, bones provide muscles attachment. Secretion of hormone. Hormones are secreted from ductless glands. Question number 29. Recognize the figure and find out the correct matching. एक स्कल का फिगर है, बोन्स के नाम लिखे हुए हैं और इसी में कुछ बोन्स की मार्किंग की गई है एज ABCDE. इनके नाम बताने पड़ेंगे. हम ABCDE के नाम एक एक करके बता रहे हैं. A is sphenoid bone. B is ethmoid bone. C is lacrimal bone. D is nasal bone. And finally E is zygomatic bone. इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर ऑल 5. Thank you so much.